सभी को नमस्ते. So I welcome you all to today's session, which is on meditation and the power of pause. So I myself, मैं वैद्य शिफाली, an Ayurvedic physician हूँ, and I'm also a counselor and a healer. And आज के session की जो speaker हैं, शालिनी जी, उनके बारे में I would like to share a few words. तो शालिनी जी is an engineer by profession, and she is a one who is a learning enthusiast. So she has studied Indian philosophy as well as studying modern psychology. She is also a certified yoga instructor from S Vyasa, Bangalore. She is also a pranic healer and into the field of education in the last 10 years. She works with children and with their parents both. आपका गोल ये है कि कैसे हम एक हेल्दी और अवेयर होम्स तैयार कर सकें या फैसिलिटेट कर सकें. सो दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हर. एंड आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपने सोचा कि इसको कैसे हम ऑनलाइन भी शेयर करना शुरू करें. सो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है. तो आज का सेशन इज वेरी क्रूशियल क्योंकि एज अ वैद्य और एज अ फिजिशियन, व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल और व्हेन आई सी माय ओन हेल्थ, सो आई फाइंड दैट चीजें सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है. थिंग्स आर एट द फिजिकल लेवल, एट द इमोशनल लेवल, एट द मेंटल लेवल, एट द स्पिरिचुअल लेवल. और इन सारे लेवल्स पे जब हम काम करते हैं, तभी एक एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग सामने आता है. सो ये जो हेल्थ है, जिसमें एक फिजिकल डायमेंशन है, जिसमें हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या दवाएं लें, ये हिस्सा होता है. और फिर एक दूसरा हिस्सा होता है कि जब हमारे माइंड में कुछ ऐसी हैबिट्स बन जाती हैं जो हमारे लिए ही विशियस होती है, उसको कैसे तोड़े. सब हमको तो पता ही है कि हमसे क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि हाउ डू आई ओवरकम इट. What is the tool that can help to break the patterns, and what is the tool that can help bring the good patterns. तो आइए इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ I now hand over to Shalini Didi, Shalini ji, and she will begin the session. So सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी अपने फोन्स को म्यूट कर लें और अपने जो उनका सेशन ये जो चल रहा है, उसमें भी अपने आप को म्यूट कर लें. अगर आपको कोई भी सवाल आते हैं तो आप जो चैट बॉक्स है उसमें कृपया करके टाइप करें. वी होप टू टेक ऑल द क्वेश्चंस थ्रू द सेशन एज वेल एज ऑन द लास्ट. इस सेशन में हमारी कोशिश ये है कि बीच बीच में जब हम आपसे कुछ सवाल पूछें तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें. So let's make it interactive and useful for all of us. So now over to Shalini ji. Okay. Thank you, Shifali. Thank you for a lot of inspiration to organize this, and thank you for such a wonderful introduction. So I would like to begin the session by expressing my gratitude. That should have been done at the last, but this is how I do things in my life. So I would like to express my gratitude to all my mentors, my teachers, my yoga teachers, my yoga gurus in S Vyasa, my spiritual guru Shri A Nagaraj ji, and you, my husband, and all others, who the visible forces, the invisible forces, who are guiding me in this direction of bringing meditation to all. So with that, I would like to present my, the presentation I have made. Let us begin with that. Okay, can you see my screen? Shifali, can you answer me?
Just a second. I'm just pinning you. Okay. Yes, I can see. Yes. Okay. Okay. Okay, everyone. So let us begin with the session today. Today we are going to talk about meditation. Here I have written a gateway to yourself. हालांकि हम आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मेडिटेशन कैसे आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट हो कर सकता है. बट ट्रेडिशनली जो मेडिटेशन का पर्पज़ रहा है वो दैट इज़ टू फाइंड आउट योर सेल्फ, यू नो, हु यू आर एंड दैट काइंड ऑफ बिगर क्वेश्चंस, यू नो, द क्वेस्ट टू योर सेल्फ. सो नीचे मैंने लिखा है तथास्तु हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, दैट इज़ द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूशन. लेट अस बिगिन. So the first question I would like to ask you all, that is, what is meditation according to you? I would be happy if any one of you would like to answer. You know, you can type in the chat box or, you know, unmute yourself and speak. Anybody? Okay, so as you are typing, I had written 4 points. Do you think that thinking continuously about one object of thought, is that meditation? Or clearing all your thoughts, you know, विचारहीन हो जाना, कोई विचार ही ना रहे, ऐसा हो जाना, क्या ये मेडिटेशन है? और मेडिटेशन इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस, या कोई धार्मिक क्रियाकलाप है ये? और इट इज़ अ डोरवे टू हेल्थ? I would like you to type A, B, C, D, you know, what do you think that is the right definition or the best suited definition for meditation? Clearing too many thoughts. Okay. Yes, A option, clearing too many thoughts. Yes. Okay, A option says that it is thinking continuously about one object of thought. Wonderful, wonderful. Yes. Okay, D option. Okay. Okay. Concentration and focus. Very good. A, B and D. Yes, Anamika ji, thank you. Parul ji says B. Okay, wonderful. So I got to know that my audience has some idea about what meditation is, or at least they have a thought. Great. So I am not going to say anything that what meditation is. I am here to make you experience what meditation is. And then, you know, we'll see because the experiences are personal. जब तक हम किसी चीज़ को experience नहीं करते हैं, क्या कहें उसके बारे में? So I would be presenting the definition, the, you know, historic reference, how it came into picture next, and next at the end I would like to hear from you what is meditation. Okay, let us go to the next slide with that. So historic reference of meditation, it comes from Patanjali Yoga Sutra. पतंजलि योग सूत्र लिखा था महर्षि पतंजलि ने, और उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बात करी है. जैसे आजकल हम लोग योग को बेसिकली आसनास को ही योगा कहते हैं ना, वी से कि हम योगा क्लासेस जा रहे हैं. योगा क्लासेस बेसिकली मीन्स कि हम तरह तरह के पोस्चर्स करेंगे, है ना. आसनास को ही आजकल हम चलताऊ भाषा में योगा क्लासेस बोल देते हैं. बट महर्षि पतंजलि सेज देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा. और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से, मैं चाहती हूँ कि आप इसको जान लें. सो दोज 8 लिम्स आर यमा, नियमा, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. तो मूल रूप से जो 8 चीज़ों का लक्ष्य है वो समाधि है. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक कि 5 यमा जो बताए हैं महर्षि पतंजलि ने वो क्या हैं. सो ही सेज, बेसिकली महर्षि पतंजलि सेज कि सबसे पहले तो हम समाज और परिवार की संपत्ति हैं या उसके कारण से आए हैं. तो परिवार और समाज में, मतलब संबंधों में परिवार के साथ या समाज के साथ किस प्रकार से रहना है, तो उसके लिए उन्होंने बताया ये 5 चीज़ें हैं दैट यू नीड टू फॉलो. 1 इज़ सत्य. सत्य का ये भी मतलब है कि पारदर्शिता, है ना. आपस में हम कैसे रहें, तो हमारे बीच में कोई दीवार न रहे, कोई ऐसी बात न रहे जो हमें एक दूसरे से रोके, है ना. हम जैसे हैं वैसे व्यक्त हो पाएँ. उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ. इतना सिंप्लीफाइड एक्चुअली में नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर द पीपल हु आर इन गृहस्थ जस्ट लाइक मी.
The next is ahimsa. Ahimsa basically means refraining from any kind of physical, mental hurt, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से हम किसी को हर्ट ना करें, दैट इज अहिंसा. अस्तेय, अस्तेय मीन्स चोरी ना करना. सो नॉट जस्ट हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों की चोरी नहीं करते, समटाइम्स यू ऑल्सो डू इमोशनल चोरी, इमोशनल स्टीलिंग. जैसे किसी को कोई क्रेडिट ड्यू है, वी टेक दैट क्रेडिट, दैट ऑल्सो कम्स अंडर अस्तेय. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट. ब्रह्मचर्य है ना, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्शुअल इंडल्जेंस, बीट मनसा वाचा कर्मणा, वंस अगेन है ना, बॉडी माइंड एंड सोल. एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स वैसे तो ये होता है कि किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है ना, पजेस करने की जो भाव है वो नहीं रखना. तो जैसे बुद्धिज़्म में भी कहा गया है, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि असंग्रह की प्रवृत्ति. तो जितना चाहिए आवश्यकता के हिसाब से अर्न करना है ना, हमें पता है कि हमारा व्यय कितना है, उसके हिसाब से जो हमने आय किया, सो दैट कम्स अंडर अपरिग्रह फॉर गृहस्थ पीपल. नाउ let us talk about niyamas. So niyamas are for yourself. तो पहले हमने सबसे पहले साधा समाज को, परिवार को. Now when that harmony comes in, after that हम साध रहे हैं स्वयं को, उसमें आता है शरीर और मन. तो उसके लिए 5 नियम बताए हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना. तो योग साधना की जो यात्रा है, अथवा फाइंडिंग द क्वेस्ट और द पर्पस ऑफ लाइफ जो है, उस यात्रा के लिए ये सब पहले ये मूलभूत चीज़ें हैं. सो नियमा में शौच मीन्स मूल रूप से होता है पवित्रता. तो शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता. देन महर्षि पतंजलि सेज अबाउट संतोष. संतोष का मतलब क्या है ना, जितना है उसमें उसको स्वीकार करना है ना, सहज स्वीकृति में रहना, ताकि और जो है उसको विटनेस भाव में रहना है ना, कि मेरे पास इतना है और यहाँ मुझे पहुँचना है. तो जहाँ हम हैं, जहाँ तक जाना है, उसके प्रति दृष्टा भाव है ना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारे पास क्या है और उसके प्रति सहज स्वीकार भाव में रहते हैं, तो आगे रास्ता खुलता है कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे. एंड देन ही टॉक्स अबाउट तपस. तपस मीन्स, तपस द वर्ड कम्स फ्रॉम ताप और हीट, और उसके लिए नुआंसेस हो सकते हैं, जैसे कि परसिवरेंस ना, हमारे उत्थान के लिए जो हमारे अंदर साहस है, दैट इज़ आवर तपस. इसके अलावा लगे रहना है ना, जो एक भाव रहता है कि तपस्या कर रहे हैं हम लगे हुए हैं उस चीज़ के लिए ना, अनवेवरिंग हमारा लक्ष्य हम उसको देख पा रहे हैं, दैट इज़ तपस. एंड देन स्वाध्याय. As Buddha clearly says, he says it very beautifully. He says there is no meditation for those who have no wisdom, and no wisdom to those who do not meditate. So that is where स्वाध्याय comes, because हम जिस परंपरा में हैं, है ना, मानव परंपरा में हम हैं, उसके हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ करके रखा हुआ है हमारे लिए. There is a lot of knowledge, understanding, that have been written, that have been passed on to us. तो उसके बारे में जो मनन चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ईश्वर प्राणिधाना. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ईश्वर प्राणिधाना इज़ बेसिकली बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन क्वेस्ट, है ना, कि व्हाट इज़ माई क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट आई नीड टू नो, व्हाट इज़ दैट आई वांट टू नो. सो इसके बारे में जो कॉन्टम्पलेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ईश्वर प्राणिधाना. नाउ द थर्ड इज आसनास, पोस्चर्स. सो महर्षि पतंजलि तो ये कहते हैं कि बहुत सारे पोस्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक पोस्चर को आप मास्टर कर लीजिए. ही सेज अनंत समापत्ति, है ना, कोई एक आसन जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकें बिना हिले डुले, बिना आपके शरीर को प्रॉब्लम होए. सो दैट इज़ आसना अकॉर्डिंग टू हिम. नॉट लाइक इतने सारे हमने पोस्चर्स जो बना रखे हैं, बेसिकली दैट इज़ टू ब्रिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन यू. Now the fourth thing is pranayama, that is control of breath. जो हमारा प्राण और वाइटल लाइफ फोर्स है, उसको कैसे हम एक्सटेंड करें, कैसे उसको एक्सपांड करें, है ना, कैसे उसका रिटेंशन हो, सो दैट वी लिव लॉन्गर. ठीक है, वी कैन फोकस मोर. सो ऑल दैट कम्स थ्रू प्राणायाम.
After that, he talks about pratyahara. Pratyahara basically means prati ahar. So ahar is not just our food, we also consume from all our five senses, है ना. तो जो unnecessary information हमारे पास आती है that we had to process without getting to the result, है ना, that is in turn going to help us to reach to our goal. तो ऐसी सारी information से withdrawal कर लेना. So that is being called pratyahara here. Now the next is dharana or concentration. So concentration, if it has to be done on an object, so हम उसके बारे में चिंता करते हैं, हम उसके बारे में चिंतन करते हैं about its रूप and गुण, कि रूप कैसा है उसका और गुण कैसा है. जैसे कि त्राटक है ना, त्राटक में हम जो कैंडल की लो होती है उसको देखते रहते हैं, उसकी विक पर फोकस करते हैं. So that is a good example of practicing dharana, if you know what trataka is. And then what is dhyana? Dhyana is basically about focusing on स्वभाव and dharma of that object, जिस चीज़ के ऊपर भी आप focus कर रहे हैं और concentrate कर रहे हैं. And then at the end the lakshya, that is samadhi, है ना. Samadhi, the word samadhi is a beautiful word, you know. It says sama dhan dhi, है ना. तो sama means samyak, dhi means intelligence. So basically getting channelized from your mana, vritti and chitta towards dhi. Dhi means basically to imbibe the intelligence that is needed to do samyak darshan, to see as it is. So that is samadhi. Okay. So I have put this beautiful picture which has been taken from BKS Iyengar's representation of 8 limbs of yoga. I just wanted you to see this, in which he says yamas are the roots, niyamas are the trunk, and pratyahara is the bark, and the branches are like asanas, you know. So asanas basically make you, ready for blooming. And fourth is pranayama. So he says that leaves are the pranayama, and I talked about pratyahara, you know. He says the bark is like pratyahara. And sixth is the sap, dharana, you know, juice which carries the energy on this inward journey and links the whole tree as one. And after that, seventh is the flower, dhyana. So dhyana ko कहते हैं कि it is the flower, and the fruit, you know, that is samadhi. Great. So this was the historic reference of meditation. Now, so in today's world, do we really have that question कि, you know, we want to know about the, you know, agyeya, or do we really have those kind of questions? If we do, this is the way to go. But when we are talking about using meditation in terms of health, so it is more like, this is how I see it, you know. If you are seeing this picture, कि there is a screwdriver and hathodi, you know, and this woman is using it to get the coconut giri out of it. तो हालांकि ये जो स्क्रू ड्राइवर, इट इज़ नॉट मेंट कि इससे एक नारियल तोड़ा जाए और इससे पानी निकले और उसके बाद उससे गरी निकले, मगर ये महिला तो यूज़ कर रही है. सो नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ टूल. It's, you know, once we have the tool, we understand the tool, we can use it any which way according to our requirement and our choice. So basically this is the transition जो हम ले रहे हैं. We are using meditation as a tool to bring back mind body balance. So how it can help? So पहले तो हम यही बात कर लें कि भाई ये बैलेंस क्यों खो जाता है हमारा, कैसे खो जाता है, एंड फिर ये टूल कैसे इस्तेमाल होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे इस वेबिनार में या फिर आगे आने वाले वेबिनार्स में. So everyone, what do you think? Our bodies are they interconnected with our minds or not? Let me see. Okay,
So, have you noticed the loss of appetite in case of emotional hurt? जब भी हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाते हैं, वी आर लाइक भूख नहीं है, खाना नहीं खाना है ना, तो सबसे पहला तो उसका इफेक्ट खाने पे ही आता है ना. सो हर्ट तो हमारा मन हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका हम देख पाते हैं कि उसका तुरंत असर जो है, मन का असर जो है वो शरीर पर होता है. एंड देन वी हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि जब शरीर हमारा ठीक नहीं होता है, जैसे फॉर मोस्ट वीमेन व्हेन दे आर इन पीरियड्स, दे जस्ट लाइक टू विड्रॉ फ्रॉम द सोशल कॉन्टैक्ट्स, दे डोंट लाइक टू सोशलाइज ड्यूरिंग दोज डेज. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड. व्हाट हैव यू नोटिस्ड कि शरीर किस तरह से मन पर प्रभाव करता है, मन किस तरह से शरीर पर प्रभाव डालता है. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? आई विल वेट फॉर अबाउट 30 seconds. प्लीज टाइप. Yes, everyone. I'm waiting for the answers. So many people are typing. Yes. Yes. Emotions flare up. Correct. Yes. And the body starts shaking. Yes. Yes. Ram Kumar ji, yes. Very rightly said. Sleep disturbances. Very good. Very good example. Yes. So many people are typing. Inflammatory disorders are triggered by emotional disturbances. Very, very right. Very right. Okay. So my audience here clearly knows that how things get manifested. Okay. So everyone, would you like to do an activity to show? I just wanted it to be a very fun exercise. Wherever you are sitting, close your eyes and we will do an activity to see how our mind affects our body. Ready everyone? Yes. Great. So close your eyes, focus on your breath. Now you focus right between your eyebrows. Now you imagine that you are standing right outside your main gate. You enter inside your drawing room. Now you enter into your kitchen. Now you move closer to your refrigerator. Now mentally open that refrigerator. Go to the vegetable basket where you see a lot of lemons. Now pick some of the lemons. Take the knife out. Now cut the lemon and squeeze the half lemon in your mouth. Keep noticing how are you feeling. Now you squeeze the other half of the lemon in your mouth. Now cut another lemon and squeeze it in your mouth. Now the other part of the second lemon also in your mouth. Now take the third lemon, cut it, squeeze it, goes in your mouth once again, and you are experiencing the sourness, the wonderful smell of lemon. Just keep focusing there. Fourth, fifth, sixth, and in goes a new lemon every time. Okay. Now, if you are smiling, come out of that state of thoughts and imagination. Come back and let me know how did you what did you experience, how did you feel. If you have done it properly,
What did your mind tell you? What did it say? Did you feel anything? I'm waiting. Felt very sour, needed salt. Yes, sourness in teeth. Okay, wonderful. What else? Yes, yes, yes. Okay. I'm sure कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा पहले तो लेमन का नाम सुनते ही. Yeah. And so how did you feel too many lemons? You know, इतना नहीं खाना है मेरे को. I felt lemon smell. Could not get more after tasting. Yes, yes, yes. Yes. Sourness and saliva coming. Yes. Thank you so much for all the wonderful responses and beautifully visualizing this. Great. So when I said, you know, that you cut the second lemon, you were like, oh my God, these are like too many lemons. So you can clearly see, you know, just by thinking, just by a single thought, your body is immediately affected. Your thought is triggered and it guides you, you know. You are like, no, I do not want to pour more lemons inside my mouth. Now my next question is, what is more powerful? What do you think? Mind or the body? Yes, lemon smell, yes. So what do you think? What is more powerful? Mind, yes, mind, of course, mind. Yes, wonderful, great audience, yes. So of course our mind is more powerful. So now I would like to ask you the next question. You know, पहले मैंने कभी सच में मतलब when I was growing up, I never used to hear these you know diseases so much. You know, अभी सबको heart attack का problem है, high BP, heart disease, asthma, obesity. Obesity तो हमने सुना ही नहीं था. Diabetes, headaches, migraines, depression, anxiety, gastrointestinal problems, Alzheimer's disease. What do you think is the major cause of all these diseases? What do you think? Type. I would like to hear from you. One common cause, one major cause that triggers these diseases. Lifestyle, yes. Yes, more, yes. Mentally illness, negative thinking, yes. Thought process, yes. Yes. So, can I call it stress? Can I call it stress? Yes, yes, thank you. Yes, lifestyle and no, yes, yes, yes. Okay, great. So, I would like you to know about stress a little bit. What is stress? You know that stress is actually a wonderful thing, you know, it is hardwired in our system. It is hardwired way of our body to respond to any threat, है ना. So stress is actually of two. हम अभी जब stress को use करते हैं ना तो हमें लगता है एक negative word है, जबकि ऐसा नहीं है. Stress is basically of two types, good stress and bad stress. Good stress is pretty much needed for our growth. So how do you know that you are in good stress? It is also known as eustress. It helps you to stay focused. And a common phenomenon in all living beings, जितने जीव जगत के प्राणी हैं सब में ये common phenomena है. And what is good stress? So basically whenever you feel relaxed and productive after facing or overcoming the source of your stress, है ना. For example, I have written here common examples are meeting deadlines कि हमने कर लिया इसको अच्छे से, है ना, मैं इसको कर पाया. So that is basically वो दबाव हमारे ऊपर पड़ता है and then you know the system is triggered for to help us to understand, to perform better. During examinations, we all have experienced this कि examinations खत्म होने के बाद the euphoria that we experience delivering a speech or after organizing a successful event, function or party. हमारे घर में शादी होती है तो I have experienced this कि 2 दिन मुझे बिल्कुल जैसे नींद ही उड़ गई मेरी और उसके बाद मैं जो सोई हूँ अच्छे से. So we have all experienced this and it helps to build resilience and self-esteem. Now I want you to type
one place where you have experienced this good stress, or where you can identify what good stresses are in your life. Yes. Yes, I am sharing my screen. Yes, I am sharing the PPT. You can also pin me at Shalini J, and you can also pin the presentation that I am doing. Okay. I am resharing. Okay, I have reshared so that you can see it if there was any problem. Yes, meanwhile I am waiting for the answers from you all. What is the good stress? Any example of good stress? Achieving targets. Yes, yes, yes. Great. So this is actually, this help, good stress हमें साइकोलॉजिकली बहुत फिट कर देता है. वी नो कि हमने इतना कर लिया तो अब मैं इसके आगे जा सकता हूँ. सो दैट गुड स्ट्रेस इज प्रिटी मच नीडेड एंड वी शुड नॉट डिटेस्ट इट एट ऑल. नाउ व्हाट इज बैड स्ट्रेस? सो हियर I would like to tell you a story. As I said कि जो फिनोमिना है ना स्ट्रेस का, दैट इज़ कॉमन टू ऑल, है ना, जो हम जीव जगत के प्राणी हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सो जैसे कि एक शेर है, वो हिरन के पीछे पड़ा है ना, द टाइगर इज चेजिंग द डियर, और जो हिरन है सडनली उसका बीपी बढ़ जाता है सो दैट ही कैन गिव दैट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्ड. ऑफ कोर्स द डियर विल नॉट फाइट, he will take the flight response, और वो तेज से भागेगा एंड कहीं झाड़ियों में जाके छुप जाएगा, where he will run until that that chase is over. और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट, आप मान लो ये 15 मिनट चेज चला, उसके बाद ये चेज ओवर हो जाएगा एंड दैट डियर विल गो बैक टू इट्स होम्योस्टैटिस और द स्टेट ऑफ हार्मनी इन द बॉडी. तो वो अपने संतुलन में वापस लौट जाएगा और पता चला 15-20 मिनट बाद तो वो आराम से बेखटके घास चर रहा होगा. बट दैट डज नॉट हैपन टू ह्यूमन बींग्स. व्हाट डू वी डू? अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ना, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी के साथ हमारा कुछ अच्छा नहीं बन पाया, है ना, तो व्हाट डू वी डू? वी कीप ऑन रीलिविंग दिस दैट सेम मोमेंट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, है ना. तो ये जो हिरन है, इसके साथ जो इसको विक्टिमाइज कर रहा था, है ना, वो तो चला गया, है ना, वो 15 मिनट में ओवर हो गया उसके लिए. पर ये जो हमारी मेमोरी है ना, इसका हम इतना बैड यूज करते हैं. सो वी कीप ऑन रीलिविंग द इवेंट, और हमारी बॉडी को नहीं पता है ना, कि ये जो घटना है, ये हम इसको एक्चुअली वी आर रीलिविंग in our mind, or is it actually happening? So our body keeps on going into that fight or flight response all the time. And imagine, that your BP, to give you the flight response, your BP has to go up. And by now it needs some time कि ये BP नीचे आए, but now you are not giving, or you are not getting that time. So I have written bad stress is basically what? When the pressure does not end, or you don't have time to recover between one task and the other. And this is only seen in human beings. So what do we do then? Common examples are जैसे इसका जो टाइगर है ना, ये तो 15 मिनट बाद ओझल हो जाता है. बट इफ़ वी हैव अ बॉस हु इज़ लाइक टाइगर टू अस, हु वी डू नॉट लाइक, या उसकी वजह से हमारे अंदर वी कैन एक्चुअली विटनेस इट, कि कभी कभी कोई सामने आता है ना, एंड वी गेट इन टू दैट मोड ऑफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी, है ना. सो कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ बीइंग अ विक्टिम और ड्रेडफुल सुपीरियर के सामने आने पर ये ट्रिगर होता है. एंड इट समटाइम्स, और सोचिए आप यू आर गोइंग टू द सेम ऑफिस, टू द सेम बॉस एवरी डे, बिकॉज यू हैव टू अर्न द मनी ऑल्सो. So what do you think, where else have you expressed
Yes. So, what do you think? Where have you experienced this bad stress? What is your example of bad stress? Where you feel that pressure does not end? You know, type and let me know. I would like to see your responses before I move ahead. Yes. Yes, yes, yes. ओह वंडरफुल, मैंने अभी अभी आपके रिस्पॉन्सेज पढ़े जो आपने पहले टाइप किए थे. या अ बैड रिलेशनशिप. ओह यस, वेरी गुड संदीप कुमार जी, यू हैव यस वंडरफुली पिन. और रिलेशनशिप से हम भाग भी नहीं सकते हैं. मिसिंग समवन, यस, द ट्रॉमा, यू नो, समटाइम्स डेथ ट्रॉमा हैपन्स, समटाइम्स द ब्रोकन रिलेशनशिप्स, because it keeps on triggering all those responses. Bad stress, heavy work, yes. जब हमें यू नो एक डेडलाइन ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद देर इज़ नो ब्रीदिंग टाइम, यू नो, देर इज़ नो वेकेशन आफ्टर दैट, देर इज़ नो रिचार्जिंग आफ्टर दैट, एंड यू जस्ट यू नो आर गिवन सप्लाइड विद अ न्यू डेडलाइन. इवन एट होम विथ रिलेटिव्स. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. दिस इज मनीषी मिश्रा जी, यू हैव पिन्ड इट वेरी नाइसली. तो हमें ऐसा लगता है स्ट्रेस उन्हीं लोगों को होता है जो ऑफिस जाते हैं. ये एक्चुअली बात सही नहीं है, यू नो. Stress happens to everyone. Yes, to all the, when someone hurts you, correct, when someone insults you, yes, humiliation, correct. Ram Kumar ji, very nicely put, humiliation. We keep on reliving, you know, and our body keeps on getting in that, you know, either it goes in fight mode or it goes in the flight mode. Wonderful. So because we have limited past insults and exploitation, correct. Oh my God, wow. Yes, you have been able to think it through nicely. चलिए आगे बढ़ते हैं because we have limited time. So now here comes meditation as a tool. The power of an aware pause. है ना, हमको पता है कि हम actually we cannot, sometimes we just can't you know get rid of all those people. You know, हम उस relationship से बाहर नहीं आ सकते हैं. We know that humiliation हुआ हमारे साथ, हम we are in that thing, you know, तो हमको उसको undo करना है. So now we need to take that aware pause. See, our brain and body, you know, for example मैं आपसे पूछूं कि कोई महंगे फ़ोन का नाम लीजिए तो you will say कि भाई आईफोन बड़ा महंगा, बड़ा अच्छा फ़ोन है, and it comes for say 1 lakh rupees, और आप उसको बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं. But you know, this beautiful gadget that we have, it comes without a manual. And if you start really calculating the cost, ना कि एक एक किडनी 5-5 लाख की है, and you know, you just calculate the cost of your whole gadget कि एक एक चीज़ कितने की है, you will understand that you are carrying this $1 million, you know, gadget, and you are not taking care of it properly. So, and here comes the, you know, here comes the role of guided meditation. Guided meditation basically helps you to imagine, you know, imagine the things which are very relaxing to your brain, and thus your body relaxes. Here I would also like to tell you that I personally believe that study of the self, you know, or darshan, or reading the great books from great people, it really helps you latch the wisdom that ground your thoughts. Because sometimes हमारा thought है ना, it just keeps getting, no, विचार है, विचार is also a tool. विचार is a tool to reach to the samadhan. But if you have no idea, you know, where you will meet that solution that does not create more problems, है ना, तो उसको वो नहीं है हमारे पास, तो विचार unending चलता रहता है. सो यही विचार फिर जो अनएंडिंग है ना, जिसको समाधान मिल ही नहीं रहा, इसी को आप कहते हैं चिंता, या इसको विचार वायु बोलते हैं आप. ठीक है, इसके बारे में अपन बात हमारे पास करने का बहुत समय नहीं है, बट यस, दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू टॉक अबाउट, है ना. सो इस वैल्यूएबल गैजेट की हमें, यू नो, वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट. एंड गाइडेड मेडिटेशंस आर वंडरफुल, वंडरफुल, यू नो. जो करते हैं वही जानते हैं, यू नो. The experience or the sweetness of pudding is in eating, you know, you need to eat it to know. So that's it, you know. I would like you to pause, you know, think that, you know, this valuable gadget that you have, and are you really taking time to do the pause, take a break, this, you know, the break, the most deserving break, you know, the best thing, the best you know, whatever you call it, property or anything,
To invest is you yourself. Are you investing enough in yourself or are you taking yourself for granted? So अभी हमारे पास जो situations है ना वो ऐसी हैं कि हम we just cannot get rid of them. For example, this the pandemic of corona. बहुत सारे लोग घर में बंद, they are just going mad. They're just not comfortable that way. So are we taking this as an opportunity to introspect? है ना? तो ये सारा विजडम के लिए हमको स्वाध्याय की ज़रूरत है. एंड गाइडेड मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स यू इन कामिंग योर सेल्फ डाउन, गिविंग योर बॉडी, गिविंग योर माइंड basically the mind gives the instruction to your brain, and in turn the brain gives instruction to your body to relax and calm down. So basically this is an aware pause. Yes. So with that, I would like all of you to pause, and now after this I would like you to take to a tour of this guided meditation, where I would ask you to actively relax your mind and body. So with that, my instructions are here. Open your mind, open your heart, open your ears, and let yourself flow. So from fight and flight, we need to switch to the response of flow. No fight, no flight. We need to give instruction to our brain that now let us go in the mode of flow. Just witness. Okay. So for that, I would like all of you you can sit in Sukhasana, or you can lie down in Shavasana. You can use pillows, like you can see in this picture. This will really help you to give a nice massage to your waist or to your back, and just relax yourself. I would like all of you to take 1 minute, lie down comfortably, and once you are done, we will start with the guided meditation session to actively relax your complete body. Sit in any meditative posture. If you know a little bit, you can use Chin Mudra. Sit in Sukhasana or lie down in Shavasana. If you are sitting in Sukhasana, then roll your shoulders. Make sure that your spine is erect. As you close your eyes, bring your attention on the tip of your nose. Focus on your breath. As you breathe in, the breath travels through your nostrils to your chest and goes till your abdomen. If you are lying down in Shavasana, you can actually feel how your abdomen is moving up and down. Keep on breathing. Make sure that your hands and legs are apart. Relax
Now focus between your eyebrows where we put bindi or tika. Focus there. As you focus between your eyebrows, also try to witness how your breath is moving your abdomen up and down. It is okay if you are getting any other thoughts during this process. Do not judge yourself. Keep breathing in and breathe out. Breathe in deeply and breathe out slowly, very slowly. Now move your attention to the toes of your left foot. Bring your attention to the thumb or to the toe of your left foot. Slowly move it to the second toe, third toe, fourth toe, and fifth toe. Slowly sweep in your attention towards your ankle. Also move your attention to the sole of your feet. Move your attention towards ankle. Keep moving it towards the left knee. Keep observing if you feel any pain or any other intense reaction or response from your body. Be aware. Focus on your breath. Move your attention from the knee towards the thighs. Keep moving it slowly upwards to the joint where it is connected to your hips. Now slowly move your attention through the left hip. Move your attention to the genital area. Move it towards the right hip. Now slowly move down towards the right thigh. Now we are moving down slowly, very, very slowly. Keep observing. Be mindful of the responses from your body. Move it towards the right knee. Observe. Slowly move your attention to the right leg, right ankle, and right foot. Do not leave any part of your foot. Move your attention through the heel, sole, and all the toes. First toe, second toe, third toe, fourth toe, and fifth toe. Now your lower body is completely relaxed. Now as you breathe in, move your attention to the navel region. Be aware of each and every cell of your abdomen, all the vital organs, kidney, liver, small intestine, and the large intestine. Move your attention simultaneously toward your waistline, the back,
Move your attention towards the chest, your lung, your heart, and now move it towards both your shoulders. Also move your attention to the back side of your shoulders. Now slowly move down your attention towards your left armpit. Your left arm, left elbow, left hand, the left palm, and all the fingers, the thumb, the index, the middle, the ring finger, and the pinky finger. Relax completely. Just relax. Now bring your attention to the right shoulder of your body. Be aware of the right armpit. Move your attention to the right arm, right elbow, right hand, the wrist, the palm, and the fingers, all 5. Slowly, thumb, index, middle, ring, and pinky finger. Relax completely. Once again, focus on your breath. Focus on your throat. The thyroid gland there helps you calibrate a lot of hormones that bring health and harmony in body. Be aware. Move your attention from the inside of the throat, the voice box, the thyroid gland, to the chin, lips, inside the mouth, the gums, all the teeth. Move your attention slowly from all your teeth. Observe the space or the cavity in your mouth. Move your attention through the jawline, through the tongue, upper jaw, lower jaw, and relax all the muscles there. Slowly move your attention through your cheek, left cheek, right cheek, your cheekbones, your nose, the nostrils. As I speak the names of the body parts, just keep relaxing the muscles there. Now move your attention towards your eyes, the under eye area, the eyeballs, the eyelids, the eyelashes, the eyebrows, space under the eyebrows, between your eyebrows, the forehead, the ears, left ear and right ear, both the temples, and the scalp and all the hair. Now also move your attention through the internal structure of your head, the brain. Relax all the muscles of your body. For next 30 seconds, just keep observing the music and the silence
in between. Now bring your focus on your heart region, heart chakra, or right between your chest. Now think of a happy event. किसी ऐसी घटना के बारे में सोचें जिससे आपका मन वापस से उन ब्यूटीफुल मेमोरीज से भर जाए. Fill your heart with love, gratitude and beautiful memories, all the emotions. Take your time, relive the experience. Breathe in deeply and breathe out slowly. Fill yourself with all the wonderful, fantastic emotions from the memory of that happy event, the happiest moment. If you feel that you are buzzing with the energy of love and light, let it flow through all the body parts of yours. Visualize yourself being filled with this energy of love and light. All the toes of both your feet, your legs, knees, thighs, the pelvic muscles, the waistline, the navel region, abdominal area, chest region, both your hands, arms, wrist, palm and all the fingers, your throat, neck, the back side of your body and the upper part of your body, your brain and body both are completely relaxed, filled with the energy of love and light. Breathe in and breathe out. Once you fill yourself, once you recharge yourself completely, now be mindful about the current state, situation and surrounding of yourself. And whenever you are ready, roll on one side if you are in the corpse pose or Shavasana, and then slowly get up and sit back. If you are sitting in Sukhasana, simply whenever you're ready, just open your eyes. Once you are done, once you come back to this awareness of this moment, this space, this surrounding, rub your palms and gently give a good massage to your face and just give this massage to all the body parts of yours. Come back, everyone.
Thank you so much for being such a wonderful audience. Once again, I would like to thank all my mentors, spiritual gurus, for giving me all the inspiration to bring this to you. Thank you. Thank you, Shefali. Yes, over to you. Thank you so much, Didi. Thank you. And before we all leave, I would like to also share with all of you that these sessions that we do is a way that we both believe that we all want to facilitate in becoming, in helping people and families become self healers, become self reliant in their health, and take charge of their emotional well being as well. So, because of that, we are having our upcoming course on 30th and 31st of December on meditation. So, those of you who wish to join can text us personally. And just to let you know that the purpose is that we also help in counseling to begin the process. अगर आपको लगता है कि आप इस process को खुद नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, तो हम उसको facilitate करने के लिए available हैं. उसके साथ साथ हम और भी courses run करते हैं, जिसमें कि प्राणिक healing के sessions है, educational sessions of Ayurveda है, जिसमें हमारा upcoming course है on kitchen, your mini preventive unit, and how to enhance and become better homemakers, because जो homemaker होता है उसी के हाथ में है the well-being of the whole family. तो इसी के साथ once again thank you so much all of you. Thank you Shalini ji for doing this webinar for all of us. I hope all of you have found its usefulness. Thank you very much.